again. Sorry. Yes. Please wait for a while. I'm gonna record this session. People are coming. ये इंशाल्लाह अजीज तीसरा दिन है, थर्ड डे है हमारा, राइट? सो सीखने वाले ही रह जाते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना वो रह जाते हैं। अभी कल से मैं भी कम हूँ। उसकी वजह ये है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में सिर्फ कहते हैं हमें प्लेट में रखें ना कुछ मिल जाए, ना मेहनत करे, ना कोई टाइम लगे, ना हिंग लगे, ना फटकड़ी, और रंग भी चोखा आए। ये सुना है आपने? सुना होगा। हाँ, लाजमी सुना होगा। Okay, host to disabled mic. Now, please, we are going to start our class, and you must write down all the questions which you have got, and at the end of the session, you can ask your questions. All right. So first, chat box is for you guys. Chat box is there. Yes, it is. It's gonna be started. Let's get started. Let's get started. Week 1, Class 2, CEFR English levels. What is CEFR and what are English levels? So today we are going to understand CEFR levels. CEFR stands for Common European Framework of Reference Languages. It's an abbreviation of common, C for common, E for European, F for framework, R for reference of languages. For example, CEFR is like a ladder of English ability. You know, if you know your level of English, so you are standing at a ladder and you know how many steps I have to move forward and where I am standing right now with respect to English language. So it tells us it works like a ladder, right? You know, a man is going upstairs. So CEFR is that stair, which tells you about your current level of English. And I've prepared a complete framework for that. I'll share with you guys today. You can check your level of English, and you can check the level of English level of your students as well. So it tells us where a learner is standing now and how high they need to climb. Instead of guessing, he is good in English, CEFR clearly says he is B1 level or she is B2 level. Actually, there are 6 levels of English: A1, A2, B1, B2, C1, C2. So these are 6 levels of English, right? There are 6 levels of English. And I prepared 100 marks test for that, for checking the CEFR level of, English. And it's especially prepared for the students. And you can use for yourself as well. Okay? You can use for checking your own level of English, for checking your ability of English. Okay? And whenever a student comes the very first day, give that test to your students so that they may know and you may know about their current level of English and how hard you have to work for that particular guy. Okay? So you don't guess. Don't guess. Don't guess. Never guess the level of English. Give them a test of 100 marks, and even you can charge 2,000 rupees for that. You're going to take a test from your students
charge 200, 2000, sorry, 2000 at least for the test. Okay, CEFR clearly says he's B1 level or she's B2 level. Okay, so this makes teaching scientific, honest, and professional. When you come to know about the level of English language of a student, you tell him that you are standing at B1, B2, or C1 or C2 like that. So you look professional, you look scientific, and you pass observation scientifically and accurately and confidently as well. Okay, so you can be honest if you are using that criteria. That criteria. Now, CEFR levels A1 to C2. These are 6 levels. Now I will tell you about these levels. A1 beginner. A1. This is the very first step. You know, yesterday I gave you guys the introduction of vowels, and now I'm gonna give you how to check. I'm gonna teach you how to check the level of English language of the students and yourself as well. So A1, it's beginner. It's beginner. What the learner can do. Say name, country, job, understand very basic words. Say name, for example, my name is, country name is my job. I'm a teacher like that. Okay? And understand very basic words. He can use, he cannot use, but he can pronounce some basic words. He knows about some basic words. And in another words, you can say that he's just starting. He's just gonna start his, journey for English learning. A1 beginner. And after performing those 100, questions, after answering the 100 questions, you can check the level very easily. For example, my name is Ali, very basic level. I'm from Pakistan, very basic level. So A1, it's A1, right? A1 level, A1 level. Okay. Now A2, 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 elementary. What the learner can do. By the way, I'll take the attendance of today's attendees, and after that, you can demand, the recording from me and all other things. I'm working for the serious guys who are present, who present themselves in the class every day. So if a person isn't ready for hard work, for giving 1 hour, 2 hour, so he does not have the right to, approach our classes, have access to our classes. A2 elementary. What the learner can do. Now, this is second level of English. Second. This is second step, you can say. What the learner can do. Talk about daily routine. Ask and answer simple questions. For example, I work in a shop. I go to work at 9 a.m. Tell about daily routine. He can talk about small, simple sentences, and he can answer the simple questions. How will you check their level? I have prepared 100 questions. I'll give you at the end of this class. Okay, so don't be worried about that. But must remember that you have to be regular in attending these lectures, doing the worksheets. Without hard work, you cannot do anything. You cannot achieve anything. Since easy example, for example, I work in a shop. My name is Ali. It was, at a beginner level. That was a beginner level. Now I work in a shop. I go to work at 9 a.m. Communication is basic but possible. So here, A1 level cannot hold a conversation, but he can do communicate.
He can do communication, but the communication level is basic, but it is possible. Excellent, I said you are writing. Excellent. Respect for you. Next one. You must write all the things. Must write it if you wanna learn. If you wanna learn. The people in Pakistan aren't ready for learning. And the day when they are ready for learning, that day, from that day, their whole life pattern will change. B1, third level of English language. What the learner can do, talk about experiences, give examples, give simple opinions. He can give simple opinions. He can talk about his simple experiences in life. And he can nation, right? I have prepared. I have for you a full lecture on stress and intonation, where you have to put stress and which part of the word will be stress. I'll guide you about each and everything. And after after that, you will be you will observe your level is going to increase. How increased? Handle daily life independently. For example, the example is given. I prefer working abroad. So intermediate level of communication is there. Intermediate. I prefer working abroad because it provides better opportunities. So this is the minimum survival level for many visas. So if you are a student is standing at B1 level, he can pass IELTS exam easily. So the first thing is you must hold a test for your student, so that you can check out the level of proficiency level of student. And as a result, you must decide that whether you are going to take the IELTS classes or you are going to put him in grammar classes. I prefer working abroad because it provides better opportunities. B2, upper intermediate. Upper intermediate. Intermediate. Are you hearing me? Is there any problem in my audio? Please tell me in the chat box. Is there any problem you're facing regarding my audio? Thank you. B2, upper intermediate. This is the minimum. If your student is standing at B1 level, it's the minimum survival level. And for many visas, this is, he can avail the opportunity to go abroad for study purposes, even if he's standing at B1 level. B2, upper intermediate. What the learner can do, speak confidently, explain ideas clearly, handle academic and workplace situations, speak confidently. If you're standing at B2 level, it's upper intermediate level, you can speak confidently anywhere with anyone, anytime, no issue about your speaking at all. And you can explain ideas very clearly. It's a good news. And you can handle academic as well as working at workplace situations very professionally. So it's upper intermediate level. Example, while studying abroad can be challenging. It significantly improves personal growth. Now, most universities and employers require this level. Most
This is the demand from most of the universities that you must have a B2 level. It is a solid B2 level. It's known as a solid level of English. Upper intermediate, upper intermediate, right? The next one, C1 advanced, advanced, advanced. What the learner can do, use English flexibly, understand complex ideas easily, and he can speak English language fluently without any hesitation. The C1 level is advanced level of English, and if someone is at this level, he can speak confidently. He can explain all type of ideas clearly. He can speak fluently. No pauses will be in his conversation or in his speech, right? Suitable for professional and academic excellence. So you must try hard to come up at this level. Come up at this level. The next one, C2. It's a proficient, near native. What the learner can do, understand almost everything, whether it's spoken by native speakers or it is spoken by any other one. So because he is near native level, you cannot be a native speaker. You must remember, you cannot be a native speaker of English. You are non-native, you will be throughout your life. Yes, you can come close to them. So if you are in the struggle to achieve that level, that can be achieved. Native level can be achieved. Nobody can be perfect. Nobody can be perfect if he learns Urdu language, Punjabi language, Sindhi, Balochi like that. He can be perfect. So same is the case with you. You are going to learn this language as a second language. So you must uh, keep this thing in your mind, and you must accept the reality. Facts are facts, and this is fact that you cannot achieve that level. You can be near native level. You can be proficient. You can come at C2 level. You can understand almost everything, and you can speak effortlessly and accurately, confidently, naturally. That happens with the C2 level people, but they are near native. So this is last level. This is the last one. Okay, example, implications of globalization extend far beyond economic integration, influencing cultural identity. Very rare among test takers. It's very rare among test takers. A1, A2. Now you must have screenshot, or you after that you can listen. You can listen, right? You can listen. A1, A2, 3 to 4 bands. If anybody is getting 4 bands, it's A1, A2. 4.5, 5 bands, B1. B2, B2 level, 5.5 to 6.5. Band 8, C1. Band 9, from 8.5 to 9 bands, if you're getting, so you are standing at C1 level. Okay, with that test which I prepared for you guys, you can check your own level of English. Important rule: IELTS band, language ability is not memorization. IELTS bands are language equals to language ability. What is your language ability? How much proficient you are in your language learning, and not memorization. Memorization is not considered your proficiency. It's memorization, right? So don't memorize anything. Try to be natural.
clear, lucid, and all that, confident, right? Now, the acceptability ratio. Now, I'm going to tell you, if somebody comes to you for IELTS, PTS, etc., and he asks which thing is better for him or which is the best course for him, you can guide him because you are going to be a teacher, you are going to be a professional trainer, highly professional trainer. So you must have all these things in your knowledge. Number one, so UK, IELTS and PTE. So IELTS acceptability level is very high. In Australia, PTE is accepted at high level, very high level. And that level is not, IELTS is not so much acceptable in Australia. So if somebody is going to Australia, suggest him PTE. Okay, right now PTE has become tough even. They have made some changes. You must be ready to teach the guys for IELTS. And if you are IELTS trainer, you can handle all the other courses. It's not it will not be very tough for you guys. Canada, IELTS is acceptability ratio is very high. If the students are going abroad from Pakistan, Europe, IELTS is accepted very high. In Europe, there are many countries. So PTE, the level of PTE is very, very low, right? So if somebody is going abroad, especially in Europe, recommend him IELTS, not PTE, right? The ratio is written over there. Okay. Professional. IELTS is more universally accepted and trusted, especially for Pakistani students. Remember. And now coming back to the CEFR level. Or CEFR tells the level. IELTS, TOEFL, and PTE only measure that level. CEFR are the actual level, is the actual level of English language. And all these tests measures that ability and capability and proficiency. Okay, so a trainer who understands CEFR never misguides a student. So the very first test as an IELTS trainer, whenever a new students come, straightforward, give him the test, and after that you can check their level of English. Okay, so it's so simple, and you must charge at least 2,000 rupees for that test. Next, understanding CEFR and acceptability ratios allows trainers to recommend the right test. You will be able to recommend the right test. And after that, what their current level of English is. You will set realistic timeline. For example, if the student is very weak, standing at BAA2 level, and you will give him some grammar classes for 1 month, 2 months, and after that you will start teaching him IELTS, teaching him or her. Build long-term trust. And if you come, in most of academies, it happens in Pakistan, then whenever a student approaches some academy, so they straight away they put them in the session. They make them sit in the classroom and they start teaching. So for a few days, he remained upset because he doesn't understand anything. So because they don't hold any test for the student, and as a result, he gets confused, and in some cases he leaves the test, and in other cases he thinks that IELTS is tough, IELTS is difficult. So first of all, you must check the level of English, and after that, your student will be very easy. And remember one thing very clearly, that IELTS is not tough, but it needs some strategies, some steps, some
tips are there, some skills are there, some strategies are there which you have to use in the test. And as a result, the test is very easy. It's not so tough as you think or as it is propagated in the society. Okay? Wait for a while. I was talking, Bismillah Rahman. I was talking about the acceptability ratio. I was not saying that it is not accepted in Australia. I didn't say that IELTS is not accepted in Australia, but I talked about the acceptability ratio. So it is accepted more in Australia. PD is accepted more in Australia than the other countries. And overall, in the rest of the world, the acceptability for IELTS is very very high. Okay, so if you have got this knowledge, so this knowledge will separate you from ordinary teachers. From ordinary teachers, you will look like or you behave like a professional teacher. Okay, so I think that's fine. Okay. Uh, the next one. The next one. Powerful collaborations for the trainers. Whatever the mind can conceive and believe it can achieve. You must have in your mind, I'm going to be the best IELTS trainer. I'm going to be the best professional IELTS trainer in my area. So write once in the chat box, I am the best IELTS trainer. I am the best IELTS trainer. Write in the chat box, I am the best IELTS trainer. And you must write 4 to 5 times every day on your diary. And if you want to be successful in your life, you must have a separate diary for writing all the important things, all your goals, all your timetable, right? So write in the chat box, I'm the best IELTS trainer. Write on your diaries wherever you are reading, I'm the best IELTS trainer in my area, right? I'm the best IELTS trainer. This gives you a positive energy, and you can perform well. But first, if you think that I'm not the best, I can be the best. Someone was saying that, my writing is good, my speaking is not up at that level. So you can improve that. Every skill can be learned. Every skill can be improved. This doesn't happen in a single day. So you have to put effort, on daily basis, but with one mentor. Without mentor, you cannot achieve that. For example, if you gonna improve your level in 10 years,
And that particular level, that journey, you can cover in 6 months or 1 year with a mentor, because you will get the things which he has learned in whole of his life, right? So you can improve that. So every skill can be learned, right? I'm a professionalized trainer. So wherever you feel that I'm weak over here, be attached, get in contact with a mentor and ask, ask his opinion and be connected with that. If you're, someone said that, my spoken English is not good. I have prepared a course for 16 modules. And, and the price of that course is 7,500. ये आपने पूछा है तब बता रहा हूं, अगर आप ना कहते ना बताता. 7,500, 16 lectures recorded, each and everything comes on time. But these days it is on discount, सिर्फ 1999 में, यानी लेस देन 2000 आप उसको बाय कर सकते हैं. मेरी वेबसाइट पे जाएं, पैसे पे करें और कोर्स तक एक्सेस ले. आपकी इंशाल्लाह अजीज अंग्रेजी, आप सोचेंगे, आपकी सोच होगी कि उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, राइट? आप उसको ले सकते हैं. और ये एक लार्ज पिज्जा नहीं आता 2000 में, और 2000 में आप एक स्किल सीख लेंगे. स्किल पे खर्च नहीं करता ना कोई. 2000 अगर आप कर सकते हैं ना, तो 16 लेक्चर्स का मेरी वेबसाइट पे कोर्स है. और उस कोर्स के बाद एक नीचे वर्कशीट होती है. जब तक आप पहले में माहिर नहीं होते, वो वेबसाइट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट सेकेंड लेक्चर इज नॉट अनलॉक्ड फॉर यू. वो खुलता ही नहीं है, वो आपको करना ही पड़ता है. उसमें कुछ क्लासेस लाइव भी मैं लेता हूं. मतलब इट्स ऑलमोस्ट फ्री, इट्स ऑलमोस्ट फ्री. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे व्यूज हैं उसके बारे में. अगर आपको पता चल गया ना 2 महीने, आई कैन डू समथिंग, सो आई कैन टीच यू, वो ऑलमोस्ट फ्री है. 1999 में यू कैन बाय दैट कोर्स. और विद इन अ मंथ, यू कैन इम्प्रूव योर लेवल. उसमें लाइन बाय लाइन सिखाया गया है कि आपने अंग्रेजी बोलनी कैसे है, एक लाइन से शुरू करके उसको 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू तक. 2 मिनट की गुफ्तगू अगर आप कर लेते हैं तो यू आर द मास्टर ऑफ दैट. इस कोर्स को भी जारी रखिए. अगर किसी बंदे की स्पीकिंग कमजोर है, सो 1 मंथ में वो कर सकता है. 2 दिन के बाद भी एक लेक्चर अटेंड कर लेना, और 2 दिन के बाद भी अगर अप्लाई करना शुरू कर देना, सो विद इन अ मंथ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ. इफ यूर राइटिंग योर, एज यूर सेइंग दैट, इट्स गुड. तो 2000 खर्च कर लीजिए, मुझे नहीं पता, नहीं करना ना करे, कोई ऐसा इशू नहीं है. लेकिन खर्च नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, ये आप जहन में रखिएगा. यस, इन जस्ट 2000, 1999. और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए मैंने उसको रखा हुआ है. एक्चुअल प्राइस उसकी 7500 है. और उसमें भी अगर कोई मुझसे लाइव क्लास लेना चाहता है, मैं उसके अलहदा 1000 ईच क्लास के चार्ज करता हूँ. और फिर उसमें एक की क्लास नहीं होती, लाइव क्लास मुख्तलिफ लोगों की लेके एक क्लास लेता हूँ, ठीक है? उसमें भी मेरी बड़ी लगे. लेकिन गुड न्यूज इज दैट उसमें भी 4 क्लासेस मैंने फ्री रखी हुई हैं कि जूम पे मैं उसी 2000 में 4 क्लासेस जूम पे फ्री दूंगा. ठीक है जी? वो फॉर अ टाइम बिंग, वो कुछ वक्त के लिए है. वो इतना सस्ता नहीं है. कोर्स बहुत बड़ा है. लोग मतलब सारी उम्र गुजार लेते हैं, स्पीकिंग ठीक नहीं होती. तो 1 मंथ में आप उसको कर सकते हैं. इन 2004 लाइव क्लासेस 1-to-1 आपके साथ होंगी, प्लस वो 16 लेक्चर्स प्लस वर्कशीट्स. और इंटरनेशनल लेवल की मेरी वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे. एंड आई वांट टू मूव अप एट इंटरनेशनल लेवल, एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट इंशाल्लाह. मैं अभी पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूँ, ये जो कुछ चीज़ें ना आइल्स ट्रेनिंग के हवाले से, ये ले लें. लिंक आप मेरे नंबर पे रब्ता करिएगा. सो अभी लिंक मिल जाएगा, उसको अभी लेके आप उसको स्टार्ट कर लें. और इट्स ऑलमोस्ट फ्री. आप जब एक लेक्चर लेंगे ना, पहला लेक्चर, आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पे ही पैसे पूरे हो गए हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मेरी वेबसाइट है, अल्हम्दुलिल्लाह ही तो आला. और आफ्टर दैट आई स्टार्ट टीच. मैं तो ये सिर्फ मेरा 1 साल है इसमें. ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए सिखा रहा हूँ, 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम. इसके बाद मैंने ये ट्रेनर्स नहीं बनाने, राइट जी? आई मूव अपवर्ड टुवर्ड्स एशिया.
आई विल बी टीचिंग टू दोज गाइस, तो डॉलर्स में पे करते हैं, उसके लिए आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दीस डेज, सारा सारा दिन पढ़ते हुए। सर इज इट पेड वन? पेड वन किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? जिसने पूछा है मैंने उसका आंसर किया है, आंसर दिया है कि वो पेड वन है, वो 2000 स्पीकिंग, यस स्पोकन, डेफिनेटली हमने हर चीज़ फ्री थोड़ी देनी है, तो दो दो वीक का आपके साथ टाइम है, ठीक है। सो ये चल रहा है, सो इसको एंजॉय करें आप इजीली। तो ये तो साइड पे उस किसी ने पूछा तो मैंने उसका आंसर दिया, अदरवाइज मैं उसको प्रमोट ना करता। बातें होंगी इंशाल्लाह आप। और एक एक और बात है, एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको टाइम देने लगा हूं। एक और बात आपको बता दूं, मेरा कभी भी ये लेवल नहीं था। मुझे मुझे याद है 2011 में मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, तो किसी ने मुझे आके कहा, आर यू अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यू स्पीक लाइक अ पंजाबी गाय। अब इससे तो बेहतर है आप पंजाबी पढ़ाना शुरू कर देना, आप समझ सकते हैं कि मेरा लेवल क्या होगा। आई वाज टीचिंग टू फर्स्ट ईयर क्लास एट दैट टाइम इन 2011। उसने कहा थोड़ा यार अपने ऊपर काम करो। मुझे उसकी बात बड़ी चुभी, लेकिन मैं आज भी उस बंदे की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत काम किया है, बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइन किया, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज किए हैं, और आज भी मेरे दो मेंटोर हैं अंग्रेज, ठीक है। करते हैं, खर्च कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। वेट फॉर ए व्हाइल, मेरा ये क्यों लो हो गया है, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। uh, इसको लगा दें ज़रा। यस, ये ना वो उतर गया था उसका। ओके, सो अभी भी मेंटोर है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल लेवल के, बड़े कमाल के। और मैंने आइल्स जिनसे सीखा है, वो आपने भी नाम उनका सुना, वो इंटरनेशनल लेवल, बहुत महंगे हैं, लेकिन किया है, अपने ऊपर काम करें। और इनकम का 3% to 10%, आज से ये जहन बनाए, बल्कि ये डायरीज में नोट कर लें कि मैंने अपनी इनकम का 3 से लेके 10% तक अपनी किताबों पे लगाना है, किताबें खरीदने पे लगाना है, और अपने कोर्सेज ज्वाइन करने पे लगाना है, कोर्सेज खरीदने पे लगाना है, ठीक है। और एक साल ये काम कर लें, सिर्फ 3%, 3 to 10%, जितना आपके लिए इजी हो सकता है। थ्री जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा आप विजन 1 ईयर अपने आप को देख लीजिएगा, लोग कहेंगे यार तुम्हें हो क्या गया है, मतलब यू आर नॉट द सेम पर्सन। आप पिछले साल तो तुम्हारा हाल ही कोई नहीं था। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भी अच्छा लगता है आपको उसको ज्वाइन करें, मेंटोर रखें। आपकी उम्र 70 साल क्यों नहीं, मेंटोर रखें। एक साल में आप इतना इंप्रूव कर जाते हैं विद अ मेंटोर, कि आपकी वो सोच होती है कि शायद आप कहें किताबों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट until a proper guide, unless a proper guide, you cannot achieve that level so quickly। 10 10 साल लगते हैं चीजों को समझने में, ठीक है जी। एक बंदा मुझे कहता है सर मैंने अपनी ना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है। मैंने उसके साथ सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू की, उसने कहा यार मैं तो अपने आप को फील कर रहा हूँ कि ये तो आपने मेरी मुश्किलें आसान कर दी है। आपने इस तरह बताया है कि यार मैं 5 मिनट की गुफ्तगू, मैंने कहा आप यू कैन बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। कहता क्या बात है, ये आपने मुझे बात, आपने तो सारा मेरा मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। सो जो जिस बंदे ने जिंदगी गुजारी होती है ना किसी फील्ड में, उसके पास वो बातें होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती। रब ताला मुनकशिफ करता है चीज़ों को, जब आप डेडिकेशन विथ योर डेडिकेशन, व्हेन यू आर डेडिकेटेड फॉर समथिंग, सो गॉड स्टार्ट गिविंग यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, राइट। अब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो खुद ही रूल बन जाते हैं, खुद खुद समझ आ जाती है कि यार ये तो इसका ये रूल भी बन सकता है, दिस वी कैन डू। वो एक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे दिया लेक्चर, वो मेरा तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने देखा फेसबुक पे, और अनलकीली वो फेसबुक ने मेरी वो वीडियो कुछ देर के बाद डिलीट कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो हो गया। 1.5 लाख ने वो 2.25 लाख लोगों ने वो मेरा लेक्चर देखा यूट्यूब पे, काफी देर होगी। उन्होंने कहा यार ये जो चीजें आपने की ये कहाँ से निकाल के लाए, मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट,
आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे वो किया है कि ये तो मतलब अंग्रेजी आसान हो गई है। ठीक है जी। और उस वक्त थोड़ा, ये काफ़ी सालों की बात है, वैसे मैं काफ़ी सालों से ऐसा ही हूँ। सो अगर मुझे कहीं वो मिल गई, यूट्यूब वो डिलीट कर दी है, वो यूट्यूब में शायद पड़ी हुई है, वो अगर मौका मिला, अगर वो अनलिस्टेड मतलब प्राइवेट ना पड़ी हो, मेरा मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज प्राइवेट। आप हैरान होंगे, आप ये हैरान होंगे कि सिर्फ 700 ही है। मेरी सारी प्रीमियम चीजें सारी प्राइवेट पड़ी हुई हैं। आई गिव देम टू माई स्टूडेंट्स। ठीक है जी। यूट्यूब के पीछे नहीं है हम ना। मैंने कभी आपसे कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो फलान चीज कर लें, जरूरत ही नहीं है ना। मतलब आप एड्स लगा के कितना कमाएंगे? आप डायरेक्टली कमाएं। ठीक, आपको भी यही है कि आपने भी डायरेक्टली कमाना है। सो 3 to 10% अपनी जात पे आपने लगाना है। फिर 1 साल के बाद मुझे आके, मेरा व्हाट्सएप वही है, चेंज नहीं होता। अगर व्हाट्सएप ना हुआ तो मेरे मेरे फोन नंबर्स मेरे सालों से वही हैं, मैं नहीं चेंज करता। ठीक है जी, क्योंकि मेरा ये सारा सासा इन्हीं पे ही है। आप मुझे बताइएगा कि सर मैंने 3% से लेके 10% तक आई स्पेंट ऑन माई सेल्फ, और उसका तो कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। ये ऐसा होगा नहीं। आप अपने आप को जरूर इम्प्रूव करेंगे। और अगर ये 5 साल तक आप सफर कर जाते हैं तो आप एक अथॉरिटी होंगे। 3 to 10%, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी सेज दैट 3 to 10% स्पेंड ऑन योर सेल्फ। अगर 3 to 10% 1 साल लगाते हैं, आपकी इनकम डबल होगी, और फिर उसी रूटीन से ट्रिपल हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। 5 सालों में आपको समझ ही नहीं आएगी मेरे साथ हुआ क्या है। यू विल बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड। ये ऐसे चीजें नहीं होती, ऐसे चीजें नहीं। और दूसरा ये, आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप साथ में टाइम नहीं दे रहे, उसको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे उस चीज को मतलब यहाँ पे आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे ना कुछ लोग आ रहे हैं, सर वो रिकॉर्डिंग मिल देगी, क्या कर रहे हैं, खाक कुछ भी नहीं होना। अगर आपके पास टाइम निकालने के लिए वक्त वक्त ही नहीं, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर यू नो फॉर 1 आवर, खुदा ने आपको देना है। आपके लिए तो कुछ और है ना इम्पोर्टेंट। तो और के लिए जाएं, कुदरत ऐसे नवाजती थोड़ी है। कुदरत उन लोगों को नवाजती है जो डेडिकेटेड होते हैं, द पीपल हु आर डेडिकेटेड एंड डिवोटेड एंड दे लव द थिंग दे आर डूइंग, द गॉड bestows those guys। ये ऐसे ही नहीं है, मतलब दिल लगा के काम करें, उसके लिए वक्त दें। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं दिस इज माई, मैं ये कहता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका दिल कुछ भी नहीं ना किया है, एक प्लेस पे डेली आए, यानी आप एक दिन आपका दिल नहीं कर रहा वॉक करने को या रनिंग के लिए, दिल नहीं कर रहा ना, तो आप उन जगहों पे लाजमी चले जाएं, बेशक स्लो वॉक कर ले, ताकि आप वॉक करने वालों में या एक्सरसाइज करने वालों में मौजूद रहें। नहीं दिल कर रहा ना, आ जाए क्लास तो लें, उसके बाद वर्कशीट को दिल नहीं कर रहा, एक जुमला उसका करते हैं। अपने आप आपका हाजिरी लगाना जरूरी है। नमाज क्या मैसेज देती है भाई? हाजिरी, हाजिरी लगानी है आपने, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। या जिस जिस काम में आप डेली उसको करना चाहते तो उसमें हाजिरी लगाएं। नहीं दिल कर रहा 20 सफ़े पढ़ने को, तो 5 लाइनें पढ़ के अपनी हाजिरी लगा ले। अपनी हाजिरी, अटेंडेंस, गिव योर अटेंडेंस। मुझे पता है अराउंड 60%, 60 और 50, मोर देन 50% पीपल आर सीरियस इन दिस ग्रुप, बट दे डोंट नो कि हम इसको वो वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि हमें वो रिकॉर्डिंग वाला मिल जाएगा। सो वो वैल्यू उनको नहीं पता कि इससे भी मार्क्स लो हो रहे हैं इन द आइज ऑफ गॉड, इन द आइज ऑफ नेचर। पीछे जा रहा है बंदा, राइट जी। सो अपने आप को अच्छे लेवल पे लाएं, और उसके लिए आपको कुछ करना होगा। नॉलेज इज ग्रेट वेल्थ। वो जो कहते हैं ना नॉलेज से कुछ नहीं हुआ, भाई आपने सही किताबें नहीं पढ़ी ना, आपको किसी ने किताब पढ़ाई पूरे स्कूल में, पूरी यूनिवर्सिटी में, कि पैसे कैसे कमाने लोगों के साथ अच्छे, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस में ना कोई शय पढ़ी हमने। ठीक है जी। और ना हमें किसी ने ये बताया कि कोई 1-2 घंटा अपने आप पे डेली अपने आप को इम्प्रूव होना है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया। सो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं बताया तो आप वो पैटर्न बन गया ना भाई। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई सर्च फॉर द जॉब, हैपनिंग दैट। किसी ने आपको ये बताया ही नहीं कि यार जो आपने पढ़ लिया ना,
इसको मजबूत कर लें और करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आप एक अथॉरिटी बन जाएंगे। और द मिडिल लेवल, द पीपल इन मिडिल लेवल, वो कुछ नहीं करते। मतलब पुअर सा, आपने कुछ मास्टर किसी सब्जेक्ट में कर लिया, थोड़ा ऊपर कर लिया, भाई इफ यू हैव डन सो यू मस्ट बी एट द टॉप लेवल। सारा पैसा आप इकट्ठा करके घर ले जाएंगे। पैसा चीज ही कोई नहीं है। मुझे पूछ रहे थे ना कल भी लोग, सर आपकी फी क्या है? मैंने कहा, सब्र करें थोड़ा। भाई रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अपने आप पे लगाना शुरू करें। 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है जी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, what the problem in Pakistan is that the people aren't ready to spend on themselves. अच्छा, अपने बच्चों के लिए भी महंगे महंगे स्कूलों में भेज देते हैं लोग ना। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर अपने बच्चों से कोई 3 गुना कम भी मैं अपने आप पे लगाता तो मेरी सारी फैमिली बेहतर हो जाती। खुद साहिब ने सीखना छोड़ा हुआ 10 साल हो गए हैं, और बच्चों को कह रहे हैं मैं बच्चों पे मेहनत, बच्चों पे लगा रहे हैं। बच्चे जब बड़े होंगे देखी जाएगी। अपने आप पे स्पेंड करें, आपके बच्चों की लाइफ साइड बाय साइड ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। कोई रॉकेट, आप न्यूयॉर्क में बैठे हो या पाकिस्तान के किसी कच्चे गांव में बैठे हो, आपकी स्किल अच्छी है, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने फील्ड में, बंदे की जरूरत नहीं होती, यार इससे मैं पूछूं कितने पैसे हैं, यार इसका तो मूल्य कोई नहीं है इस बंदे का, इस फील्ड पे होता नहीं है आपके पास। बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट आइल्स ट्रेनर है, और इज एट द टॉप लेवल। आपकी सांस रुक जाती है वहां पे, यार मैं इसको कुछ ऑफर करूं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे बेचारे इमाम मस्जिद इस तरह की जिंदगी बसर करते हैं कि वो मतलब अल्लाह ही है, उनको गुजारा उनका हो रहा है। उसी फील्ड में रहते हुए 1 घंटे के लिए आने वाला बंदा, वो कहते हैं मैं 10 लाख चार्ज करूंगा। द पीपल ऑफर देम, गिव देम। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्किल। सो improve your skills and improve your knowledge. लोगों की जरूरत ना हो कि वो आपसे कहें यार इस बंदे का तो मूल्य कोई नहीं है इस फील्ड में। He's working, he has been working this for a longer period of time, and he knows how to teach, how to deal, how to pass information. Believe it can be done. You must believe that. बस साल एक लगा लें अपने ऊपर, साल के बाद आपकी हालत चेंज हो जाएगी, आपका फाइनेंस चेंज हो गया, आपकी फैमिली में मोहब्बत चेंज हो जाएगी। भाई जब पैसा ही डबल हो जाना है, आपकी बच्चों की लाइफ बेहतर हो जाएगी। 1 साल के बाद अपनी लाइफ आपको किसी और लेवल पे मिलेगी। मतलब प्लॉट्स पे लोग खर्च कर रहे हैं, लोग कमेटियां डाल रहे हैं, मिडिल क्लास लोग। और लोग जनाब बाइक नहीं लेनी है, बच्चे को मोबाइल फोन नया लेके देना है। कभी सोचा ही नहीं है कि यार ये भी एक मैदान है, ये भी पड़ा हुआ है, ये इस दिमाग को भी हमने कुछ देना है, इसको भी हमने इम्प्रूव करना है, अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना है। शूज टूटे पहन लें, गाड़ी टूटी रख लें, बट अपनी स्किल पे ज़रूर खर्च करें, और सारी ज़िंदगी करते रहे। नहीं तो फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट स्पेंड ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल मेरे कहने पे लगा दें, और सारी ज़िंदगी अगर आप छोड़ गए तो मुझे आके कहिएगा, आपका लेवल ही चेंज हो जाएगा। मैंने ये जो कोर्स है, इसके लिए मैंने बहुत ह्यूज, आई स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बड़े पैसे लगाए अंग्रेजों के साथ, राइट जी। सो उससे कई गुना ज्यादा कमा चुका हूं अभी, मतलब कई गुना ज्यादा मैंने कमा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बाहर से ये वाला कोर्स ना करता तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। इट्स वेरी सिंपल, राइट जी। कि मैं बहुत सारी चीजें, मैं आई एम कॉपिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई टीचर। जो जो भी आपको अच्छी बात लग रही है ना, वो मेरे सब उस्ताद की बातें हैं जो मैं आपके साथ करके यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। ठीक है, और आप बाद में वाह वाह कर रहे थे, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि दीज आर थिंग्स आई हैव टेकन फ्रॉम माय टीचर। ये मेरे उस्ताद की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ये मेरे उस्ताद का मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है जी। और अभी देखिए फॉर एग्जांपल 2000 का एक कोर्स है, जो अगर आप कर जाएंगे डेफिनेटली कर देंगे, महीना लगा लें, उसकी लिमिट ख़त्म कर दूंगा आपके लिए।
उसको 1.5 महीना लगा लें। अगर 1 महीने में, 1.5 महीने में आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, सो 2000 में एक पिज्ज़ा नहीं आता, 2000 में 2 मेहमान आप डील नहीं कर पाते, लेकिन एक स्किल के लिए लोग इतना भी स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं होते। दिस इज अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। अब बहुत बातें नहीं करने लगा मैं, आपको अभी आपको टाइम देता हूँ और खुल के मैं आपको जो क्वेश्चन करेगा उसका खुल के आज जवाब दूंगा, क्योंकि कल का एक्सपीरियंस ये है कि सारे लोग क्वेश्चन नहीं करते। तो जो भी क्वेश्चन करेगा इंशाल्लाह मैं उसको पूरा जवाब दूंगा। बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट कमाऊंगा, आपका दिमाग आपको रास्ते दिखाएगा। सर सांस रुक गई वाला टाइम अब गुजर गया। अच्छा, इसको मैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन को रिमूव करूँ। ठीक है जी। माशाल्लाह सो मेनी पीपल आर ओवर हियर। सो आपका शुक्रिया। आप समझते हैं इस काबिल कि मेरी क्लास ली जानी चाहिए। सो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है जी। मैं आपका आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइस। और दूसरी चीज़ ये, 1 मिनट बस ठहर जाए। सॉरी सॉरी फॉर